when you practice, no, spend some time nomenclature also. Because अगर आपको nomenclature नहीं पता है तो आप आंसर पता है ना होने के बाद भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दैट इज द रीजन व्हाट हैपन. नॉमेनक्लेचर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है. फिर भी मैं देता हूं जो अभी डिस्कस किया ना वो फिर ले लेंगे. अभी देखो यहाँ पर ये क्या है एक्चुअली मिथाइल अल्कोहल है. कॉमन नेम मिथाइल प्लस सी. यहाँ पर मिथाइल प्लस अल्कोहल. OH is nothing but alcohol. IUPAC nomenclature, one carbon is there, meth, ane because of what? Single bond, ol because of OH. See, meth, ane, ol like this. This is because of one carbon. This is because you are having only sigma bond, single bond is there. This is because you are having OH. Next one. This is called what? Tell me. What's the name of this one? Ethanol. Ethanol. Common name. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. IUPAC nomenclature will be eth plus ane plus, isn't it? Eth plus ane plus ol. But this is vowel sound, no. So remove the e here. Okay. Next we'll see the third one. So shall I move fast? I will move थोड़ा fast जाता हूँ because आप नो ये जानता है कि अब प्रैक्टिस करने के लिए हम ले एक्चुअली ये सारे मार्क्स हम ले रहे हैं एक्चुअली. Now this is called propyl alcohol. Now N stands for what? It is straight chain. N stands for it is straight chain actually. All the carbons present on same chain, same. Therefore it is called N. Propyl alcohol. If you have one carbon methyl, two carbons ethyl, similarly three carbons, it is called propyl. N propyl alcohol. Now IUPAC nomenclature will be propanol or one propanol. Okay, one propanol or propan one nol because on first carbon you are having OH. Next we'll see this one. Just now I told isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol, isn't it? Or secondary propyl. Iso secondary both will get same nomenclature for propyl only. Only for propyl I'm saying. Isopropyl alcohol, secondary propyl alcohol will same. Doesn't means always secondary will same. No, only for propyl only we get same like that. IUPAC nomenclature we will get 2 propanol or propan 2 ol because second carbon is having OH group. ये मैं PDF देता हूँ थोड़ा practice करो इसको सभी. Now this one if you observe what happened, it is also what straight chain only, but because some gap is made, that is the reason I have taken like this. This is called what? N. How many carbons are there? Butane. This is not substituent beta. यहाँ पर आप CH2OH ऐसा लिखना है actually. ठीक है ना? So, N-butyl alcohol or butane 1-nol it is. But can anybody give nomenclature for this one? Common name is possible for you? Secondary butyl alcohol. Secondary butyl alcohol तो आपको यहाँ आइसो नहीं आएगा. यहाँ आइसो क्यों नहीं आएगा? Why it is not having iso here? Because secondary carbon doesn't have methyl group. Very good. Second carbon में methyl group नहीं है. So second carbon actually OH group है. तो इसको आप iso नहीं बोल सकते. मगर secondary बोल सकते हैं क्यों? The OH bonded carbon bonded to how many carbons here? 2 carbons. इसको आप secondary बोल सकते हैं. और total number of carbons. Entire the molecule containing what? 4 carbons. Therefore you can call this one what? Secondary butyl alcohol. If entire carbon is having 5 carbons, what you have to call? Pentyl alcohol like that. IUPAC nomenclature will be anybody? Butane 2. Butane 2 all. Butane 2 ol, isn't it? 2 butanol also we can call butane 2 ol like that. Next, this one is common name anybody? Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Very good. Tertiary because OH bonded carbon bonded to 3 carbons here. Now IUPAC nomenclature will be this one. Already we discussed. Already been we have just discussed this, completed this. This one is also called isobutyl alcohol because see second carbon is having methyl group here. See second carbon is having butyl it is. Now secondary butyl alcohol is different. Secondary butyl alcohol is different. Isobutyl alcohol also different. Understood here? Just now we got this. But isopropyl alcohol and secondary propyl alcohol both are what same. ये आपको समझना है क्योंकि structures will same.
isn't it? ये different है. IUPAC nomenclature will be numbering start from in this direction, like this. So this is called what? 2-methyl propan 1-ol. 2-methyl propan 1-ol it is, isn't it? Next. This is called neopentyl alcohol. Why? Because second carbon is having 2 methyls. That's neopentyl alcohol. Total carbons are 5. Now again it is called 2,2 dimethyl 1 propanol. 2,2 dimethyl 1 propanol. Right? Next. 10th structure. So chain increasing. The structure of the length of the chain is increasing here now. So this you are saying what complicated structures. Now no need to use what here common name. Common name जिसको use करते हैं जिसमें simple molecule को common use कर सकते हैं. अगर आपका नाम बड़ा नाम है, ज्यादा नाम है तो आप छोटा नाम देते हैं ना. IUPAC name will be lengthy because based on the rules actually. Now here IUPAC nomenclature numbering starts from which, from in this direction or in this direction? Anybody? Left hand or right hand side? Left hand side or right hand side? Left hand side. Right. ये देखो बेटा, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड. अभी बोलो बेटा. Left. कोई राइट बोलते कोई? Is anybody say right? Sir, Hariom, right, sir. Hariom saying right. You said right, but you are wrong. You are saying some right, but you are wrong. Why? Because here, if you write nomenclature here, what? Yes, sir, I got that, sir. Yes, sir. 2, 3, 4, 5. Now locant position here what? 2 is getting 2 times, no? Here 1 time, here 1 time. Write down the locant position 2, 2, here also the locant position is what? 3 and 4 is there. 3, 4. This is the locant position. Now if I give numbering from this direction, now leave it this one. If I give numbering from this direction, now what happens here? 2, 3, 4. Now locant position 2, 3, 4, 4. Now 2 get cancelled. Now here you are having 2, you are having 3. So this is the lowest one. So go for this one. Otherwise add everything. 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, 11. 4 plus 4, 8. 8 plus 3, 11. 13 you are getting. So lowest number you have to go. So the correct one will be what here? From left side here. Yeah, आप गलत करना है. When you do what mistake only, you will realize that one. Next time you don't do mistake here. Okay, you have to do compulsory. When you are doing nomenclature, you have to do mistake compulsory. Then IUPAC nomenclature will be what? 2, 2, 4. Trimethyl pentan 3-ol, isn't it? 2, 2, 4. Trimethyl pentan 3-ol it is. This is about some complex nomenclatures. Now this one will be 1, 2, 3, diol. Butan 2, 3, diol it is. तो कैसे नंबरिंग देंगे? यहां से देना है आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now you are having fourth carbon is having ethyl. Therefore 4 ethyl heptane 2, 3 diol it is, isn't it? 4 ethyl heptane 2, 3 here E no need to remove this one. Why? Because it is not at all oval here. So don't remove the E here. ये कैसे देगा आपको? नंबरिंग कहां से देना? यहां से देना है 1, 2, 3, 4, 5. Again pentan 1, 2 diol. So it will be simple for you. When you get the main number of strengths, what happens? It will be simple for you. Now this is for your exercise. You tell me what is the nomenclature for this one? I given numbering already. Now tell me the nomenclature. Now one is chloro, other is methyl. Alphabetical order you have to go for this one. 4-chloro, 2,3 dimethyl pentan 1-ol. Very, very good. 4-chloro, 2,3 dimethyl pentan 1-ol, isn't it? Next we'll see one more structure here. आप करते हैं ना ये सारी, मैं पीडीएफ देता हूं, आपको करना है ये सारी चीज, प्रैक्टिस करो ऐसा. यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर थर्ड कार्बन में क्लोरीन है, ये आपको देखना है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1, 2, 3. सी एक्चुअली नंबरिंग यहां से दिया आपने. देयर आर गिविंग नंबरिंग लाइक दिस हियर.
See, you can't give numbering in this direction. Is it possible to give numbering in this direction? No, because if we give numbering in this direction, the main functional group is not getting number here. So that is the reason straight chain we can't give here. Numbering kahan diya jana? Blue color. The blue color is the correct way. Substituent is having a substituent here. कहां पर है? फर्स्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है. Therefore it is called 1-methyl ethyl. Red mark में है ना? 1 is having a methyl group and this is now called ethyl. 1-methyl ethyl. यहाँ पर अगर डाउट है तो आपको 11th क्लास में जो मैंने पढ़ाया, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ा, वो आपको एक बार पढ़ना है. ये substituent is having one more substituent, that is methyl. On which carbon the substituent is having substituent? On first carbon you are having a substituent here. Therefore it is called 1-methyl ethyl. Next, one more thing. Third carbon, this is called chloromethyl. The name of this one is called chloromethyl. So for 3-chloromethyl, second carbon is having a substituent that is called 1-methyl ethyl. Next remaining is the pentan 1-ol it is, isn't it? So practice this structure. You will get that one in the textbook also. Here also one more thing is also there. I think you will know this one, everything. Now double bond you got. Now definitely you can't start numbering middle. Either you can start from right hand or left hand. Middle you can't start. Therefore numbering you have to give from here. Therefore it is called hexagon 1 3-ol action. ये भी आपको प्रैक्टिस करो 18th स्ट्रक्चर. ज्यादा में ये भी प्रैक्टिस करना है. नाउ यहाँ पर एक बार देखता हूँ. यहाँ पर रिंग आया ना आपको, तो नंबरिंग कहां से देना? ये सब्स्टिट्यूएंट है. ब्रोमीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट where OH is the functional group. So functional group must be get higher priority. Numbering we start from where? 1 2 3 like this. So the nomenclature will be here 1 to 1 3 bromo cyclohexane whole. Cyclohexanol you can call this one. So the nomenclature will be called 3 bromo cyclohexanol, isn't it? 3 bromo cyclohexanol. 1-ol no need to call, because if it is 3 it will be 1 only, no? Where it will be 3 it will be 1 only. So you can simply call 3 bromo cyclohexanol. Cyclo because ring it is. Ex because ring carries 6 carbons. In single bonds are there. OH is on first carbon will be 1-ol. बोलो आंसर बोलो बेटा मेरे को जल्दी. 2 मिनट में बोलना है आपको, 1 मिनट में बोलना है. B. 2-methyl नंबरिंग ऐसा लेना है आपको 1 2 3. 2-methyl प्रोपन 2-ol. B will be the answer here. इसको बोला आंसर. नंबरिंग कहां से देना है आपको? यहां से देना है आपको. यहाँ पर OH का लिस्ट नंबर आएगा, वहां पर से नंबरिंग आपको देना है. तो क्या हो जाएगा? 2 का मात्री डाई 4th. B option. 1 ये वास्तविक में होना चाहिए. हाँ, ये इसी वजह से आपको जल्दी नहीं बोलना है एग्जाम में. अगर यहाँ पर जल्दी बोलना है कंपलसरी. अगर नहीं जल्दी नहीं बोले तो आप कुछ नहीं बोलेगा. एग्जाम में जल्दी लिखना है आपको, जल्दी नहीं लिखना है आपको. जल्दी क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर ऐसा 2 ऑप्शन सेम ही रहेगा, ऐसा दिखने में जैसे सेम ही रहेगा मगर एटलीस्ट 1 पॉइंट में डिफरेंट रहेगा, तो थोड़ा देखकर आपको आंसर बताना है. इसको कैसे बोलेंगे? अभी आपने कंप्लीट किया ना. D. D option. 3-bromo cyclohexanol. Now let me see some structure of functional group here. आप टेक्स्ट बुक में है, एक बार आप देख सकते हैं ये. Now if you observe what happened, the carbon length, I have taken some methanol here. See the bond length between carbon oxygen 142 picometer and bond length between O and hydrogen will be 96 picometer, because oxygen is more electronegative. That is the reason bond length will be shorter here. Now the structure of phenol, if you observe what happened. Now here the CO bond length is what? Decreasing, because it is sp2 carbon. Yesterday only I told you sp2 carbon will have shorter bond length, and this carbon is what? sp3 carbon. So here sp3 carbon oxygen bond length is what? More, whereas sp2 carbon oxygen bond length is shorter. Yesterday only I told you this one, shorter bond length. How much it is? 136. And the bond angle will be 109 degrees something here between this one. Now for the dimethyl ether, if you observe what happened,
In dimethyl ether 141 picometer, here also it is sp3 carbon, but because of bulk groups what happened, the repulsions it will generate what 141 picometer here. ये भी sp3 कार्बन है, आपको कितना आएगा 141. अब बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है आपको 111.7. ये एग्जाम में आपको नहीं पूछते, मगर फिर भी स्ट्रक्चर्स आपको याद थोड़ा देखो, एक्चुअली एग्जाम में कोई नहीं पूछते इसको. Now this bond angle slightly lesser than the 100. Generally sp3 hybridization होता आपको 109 degrees हो जाएगा because of repulsions what happened. That is, so already I told you 136.9 shorter when you compare with phenol because of the hybridization. अभी आप मैंने बताया इसको. रीजन भी कल मैंने बताया, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ऐसा. अगर आप फिनोल लिए तो यहाँ पर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे. यस्टरडे हमने बताया आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं. ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो रहा है 136 पिकोमीटर हो रहा है. अगर आप मिथेनॉल लिए तो sp3 कार्बन लिए तो रेजोनेंस हो जाएगा. यहाँ पर रेजोनेंस इज पॉसिबल इन दिस केस. रेजोनेंस इज पॉसिबल हियर, not possible resonance. There is no resonance is not possible here. So it will be 142 picometer because of sp3 hybridization. The order of the bond angle, if you observe what happened, this will be the order of bond angle. Ethers will have phenols, everything. Order of bond length also, if you observe, almost the same. One is 142, other is 141, almost the same. So no need to take exactly like that. Now, where we use methanol actually? Methanol is used in the industrial solvent for oil, fats and everything. Dry cleaning, preparation, perfumes, anti-freezing agent. ये आपको याद रखना है, anti-freezing agent. Freeze नहीं करते, methanol use होता है. इसको freeze, अगर freeze नहीं करना है तो आपको क्या कर लेना है, आपको methanol लेना है इसको. Freezing point decrease करेगा ये because of methanol. To prepare chloromethane, ये भी आप to prepare formaldehyde generally हम लेते हैं, methanol को लेते हैं. ये uses हैं. इथेनॉल का यूज क्या होता है, ये है एक्चुअली. ये 10% इथेनॉल हम पेट्रोल में आपको 10% ऐड करते हैं ना, और वो क्या बोलते पावर पेट्रोल बोलते हैं ना, थोड़ा ज्यादा महंगा होता है ना, 2-3 रुपया महंगा होता है ना वो पावर पेट्रोल. उसमें क्या लेते हैं आप, थोड़ा इथेनॉल ऐड करते हैं, थोड़ा 5% इथेनॉल इसको ऐड करेगा उसको, वो पावर पेट्रोल बोलते हैं. अल्कोहल आल्सो यूज्ड इन द बेवरेजेस. आपका जो पेरेंट्स ये पीते हैं ना जनरली, इसमें रहेगा आपका और पीते नहीं. एंटीसेप्टिक में अगर आपका जो एंटीसेप्टिक जो लेते हैं ना, उसमें भी ये अल्कोहल यूज करते, स्पिरिट में यूज करते हैं ना. स्पिरिट में क्या होता है, अल्कोहल ही होएगा, इथेनॉल हो जाएगा एक्चुअली. To prepare chloroform, iodoform, acetic acid also we use the ethanol. Now एक important point है आपको, rectified absolute spirit क्या होता है. absolute spirit क्या हो जाएगा, absolute spirit. absolute spirit का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर 100% अल्कोहल, जिसमें वाटर का कंटेंट नहीं होता है ना, ओनली अल्कोहल रहते हैं इसमें, वो बोलते क्या, absolute spirit बोलते हैं. रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या बोलते हैं, 95.6% अल्कोहल रहते और रिमेनिंग 4% क्या होता है एक्चुअली, वाटर रहते, जिसको आप बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे. इसको बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर. सो रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब क्या है, 95.6% इथाइल अल्कोहल एंड रिमेनिंग विल बी वाटर. एब्सोल्यूट स्पिरिट मींस व्हाट, 100% ऑफ अल्कोहल. पावर अल्कोहल अभी ने मैंने आपको बताया. पावर अल्कोहल, अब पेट्रोल जिसका महंगा होता है जनरली 2-3 रुपीस महंगा होता है, क्योंकि ये अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल आपने ऐड कर रहे हैं ना, इसका वजह से. इथाइल एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या, ऑलमोस्ट ऑल 100% इज व्हाट, इथाइल अल्कोहल. बट 100% आपको प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, isn't it? अगर आप एक्चुअली अल्कोहल प्रिपेयर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं. डिस्टिलेशन कैसे करते हैं आप, बाय हीटिंग. व्हेन यू आर हीटिंग व्हाट हैपन, द वाटर विल बी एवापोरेटेड. बट व्हाट हैपन, 100% लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जनरली एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस इट इज हैविंग अल्कोहल, बट डिफॉल्ट कुछ तो वाटर उसमें रहेगा.
तो इसके वजह से आप 99% बोलते हैं, मगर जनरली व्हाट हैपन 100% ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? अल्काली है उसके। ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो ये क्वेश्चन, आप सभी पढ़ो। अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। व्हाट इज द रीजन, बता सकते हैं आप? जल्दी बता सकते हैं आप? कंपेयर करना है आपको, आल्केन कंपेयर करना है, CH3 और CH3OH, ये आल्केन है और ये क्या है? अल्कोहल है। तो क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल्स आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्केन। क्वेश्चन समझ गया सबको? आंसर बताना है आपको। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन? यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, बोलो बेटा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चांसेस हैं अल्केन पे? आप हाइड्रोजन Yes, sir. एब्सेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन से हो जाएगा और ऑक्सीजन से हो जाएगा, नाइट्रोजन से हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको क्या बोलना है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर क्या हो जाएगा? इंटर का मतलब क्या है? CH3OH। नेक्स्ट आई एम राइटिंग वन मोर मॉलिक्यूल, CH3OH, दोनों मिथाइल अल्कोहल्स ओनली, बट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा, बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो इसको इंटर बोलेंगे। विद इन द मॉलिक्यूल में क्या बोलेगा? आपको इंट्रा बोलेंगे। फ्रीजिंग एजेंट किसको लेते हैं हम? अभी मैंने बताया लेते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, अभी हमने बताया इथेनॉल। ये बोलो Rectified. रेक्टिफाइड स्पिरिट। Rectified. इसमें सीओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, बोलो बेटा किसमें आएगा ज्यादा बॉन्ड लेंथ? किसमें आ जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल में आएगा। 142 पिकोमीटर है, इसमें कितना आएगा? 136, इसमें भी 141 और 142 आएगा। कैसे आंसर दे? अभी हमने प्रैक्टिस किया ना इसका। आंसर क्या है बोलो? बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन CO बिकॉज ऑफ व्हाट? सर A and B. हाँ वेरी गुड, डबल बॉन्ड आता है बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन के। With this what happened? We completed the nomenclature. Right, still I will take some five minutes I will take now to get one preparation method, to complete one preparation method, isn't it?